let's just begin our class. So I hope everyone is able to hear me. Am I properly audible? And can you also see my screen? Yes, ma'am. Okay. Okay. So till now, what we have done is that we have been going through the first 6 chapters of economic survey. All right. So in the first 6 chapters, what you all have done is that you have got in the initial chapters, you've got a basic idea of how the economy is working. And in the later 3 chapters, you were able to get into the specific sections of the economy. We went into understanding the reasons why certain monetary policies were put up by the government. And we have been able to know exactly how the various kind of problems that were existing in the world, how those problems impacted India and how India dealt with it. So we came across a few new terms as well. And also we got to understand a bit more about the standing facility in the last lecture. Today, again, we will continue with our understanding of what all is happening in the economy. But before we start that, okay, are you people able to see me? No, I don't think so. Your video is not actually visible, Tahzeeb. Okay. So can you see me now? Has it started? Not yet. Oh. Okay, 1 second. The video is still not visible, right? Yeah, not visible. Okay, let me reconnect. 1 second. You can see her? Rohit, can you see her? Is everyone able to see me? No. Or no? Yes. Okay, then there is Yes, some ma'am. problem. Is my video visible to you all? Okay, continue, Tahzeeb. Continue. I mean, are you able to see my screen, or are you able to see me, or there is nothing on the screen? Achha, me as well as the screen. Okay. All right. Okay, so what I was telling you about was that in the last few chapters, we dealt with certain basics of the economy. We also went into understanding the different monetary policies that came up. We also went into understanding how we dealt with all the problems that the economy as such is facing all across the world, and how it was almost impacting our economy. But we managed well by coming up with newer tools. For example, we read about SDFs. All right. So today's lecture is an extension of our understanding of the economy. But the first topic that we will take up today is climate change and environment, and how has this impacted our economy, what our country has decided to do about this, and how the world is again facing it. We will talk a bit about COP27 also. We will come across a few terms that were introduced while those discussions were going on in Egypt. And I'm certain that most of you must have read environment by now. So अच्छी खासी आप लोगों को understanding आ गई होगी. But we'll try to understand how India is taking care of these things. And along with whatever is happening right now, we will also get to know a few of the schemes that have been there, that were devised quite early by our country, and a few other schemes that are the latest additions to our methods of dealing with all these climate change problems. So that will be the first chapter. Other than that, we will also look deep into what all is happening in our agricultural sector and what is happening in our industrial sector. Both these things were taken care of earlier also when we did the first 3 chapters, the earlier 3 chapters also. More or less, we'll see that whatever understanding we made in while reading chapter 4, we will be implementing that understanding, and very quickly we'll be able to understand these 3, because this is just simply whatever you have understood till now. Now you will see the impact of all that, all those schemes and everything that has been done in the form of data, in the form of analysis, etc.
So let us begin with the first chapter of today. I hope people are able to understand what I'm talking about. So is it fine? Should we start with this? All right. Okay. So in chapter 7, as you all can see, it talks about climate change and environment, preparing to face the future. Now, why does the name of the chapter sound like this? It is simply because the last time when we had the Paris meet, we realized that 1.5 to 2 degrees Celsius of a rise in temperature is something that seems inevitable. And the world is grappling with that. The whole world is trying to come up with certain ways in which we can reduce our emissions, in which we can change the kind of energy sources that we use, so that we'll be able to limit the rise in temperature to as less as possible, so that we still are able to maintain life on Earth. Keeping that in mind, the whole world has tried to come up with new schemes. Therefore, our country has also decided that certain things have to be kept in mind, and we also need to make certain changes. Here on the screen, you people can see that certain schemes have been mentioned. Progress on 8 national missions of the NAPCC. Okay. So what is NAPCC? It is the National Action Plan on Climate Change. This is one of the major methods that we people have come up with so as to deal with climate change issue. We have come up with certain schemes and certain programs that will help us in making India much more green, keeping India much more green, and also simultaneously dealing with all those problems that have been coming up in the last few decades. All right, one thing that we people already know, and then that one must remember before starting this topic, is that the kind of change, the kind of climate change that the world has been seeing in the last few years, last 50 years or last 100 years, has been on such a large scale that any other change that was brought up in the climate before these 50 years or before these 100 years cannot match the level and the intensity of these changes. Therefore, the kind of reaction to it from our side to prevent this climate change also has to be exponential. All right. So let us look into what all is written here. Okay. The first thing is that in this chapter, we'll be making a discussion. We will be discussing an approach to renewable energy transition and the low emission development strategy that we have come up with. Then, as I mentioned, we will be talking about COP27, what all we have been talking about. We have been talking about how loss and damages can be mitigated. We have been talking about the various ways of being prepared for any kind of change that comes up. All right. So progress on India's climate change, when we talk about that, we talk about India's climate vision is integrally linked to its vision of development. Now, this is something that we must clearly understand. India is a developing country. Our problems are not just that of taking care of climate change. Our problem is also of bringing about development. In the last lecture, we talked about the hawkish stance, in which we said that we people are trying to control the inflation, we are trying to do all those things, but simultaneously we have to think about the growth also. We cannot neglect growth. Similarly, in case of climate change, इंडिया जो है, इंडिया को क्लाइमेट के बारे में भी सोचना है, और उसके साथ साथ में इंडिया को ये भी सोचना है that we have certain problems that are integral to the developing nations. And it is because of this that we are now trying to make our voice more loud, so that the developed world, that all those countries that were earlier making the strategies and plans for mitigating the impact of climate change, those countries should also be made aware that our problems are slightly different from theirs. For example, we cannot immediately stop the emission of gases from our industries, because we do need industries. Many of the developed nations do or they can think about doing such things. They can think about reducing their emissions from their industries, etc., because they have already reached a good level or a high level of development. But for us, it is not the case.
we have to feed a lot of mouths. Most of the developing world has a large population, and those nations are also marked by poverty, by diseases, etc. And the same thing has been mentioned here. So this is like kind of a basic understanding that you should have why we people are doing all these things. All right. So for because of this aim, because of this balance that we have to maintain between growth as well as keeping the climate change under control, we came up with certain things. The first thing that every student must know is the National Action Plan on Climate Change. Now this is one of our basic strategies that we have come up with. National Action Plan on Climate Change came up in the year 2008. It came up with 8 plans. All right, we added a few things to it over the years, but the major 8 plans that are there, they are mentioned here itself. So we have the solar mission, we have the mission on enhanced energy efficiency, we have the mission for green India, we have for sustainable development, etc. These are all mentioned here. I would suggest you people that you should know a good amount about these programs. These are always important for the exam. Besides, they are directly mentioned here, so definitely they become even more important. You should know exactly what all is happening in all these programs, and what is the aim of these programs, and who all are working for these, what kind of schemes are framed so as to fulfill the aim of these programs. All right, like for example, National Water Mission, Jal Shakti Abhiyan, Catch the Rain 2022. These kind of things you should know, which program is associated with which thing, and then which of these sub program can be linked with the other schemes, etc. All right, the second thing that the survey is talking about is National Adaptation Fund for Climate Change. It is, as I've marked here also, it's a central sector scheme. All right, the third thing is the increase in the number of the Ramsar sites. Okay, so we talk about countries such as UK, we talk about these nations, and we talk about the large number of Ramsar sites being present there. As far as India is concerned, we know that we have almost all sorts of topography that can be imagined. Along with that, we also have all sorts of natural flora and fauna. Along with that, we also have many cultural sites. So no matter whether you are talking about any natural phenomenon or you're talking about any man-made phenomenon, India has an access to all of those. Therefore, we see that in the last few years, there has been a tremendous rise in the number of the Ramsar sites. Now, as the economic survey is mentioning, we have 75 of those. And in the last 8 years, we see that there has been a lot of addition to that. The largest number of addition, that is 49 of these 75 in the last few years, last 8 years. Then we are also talking about the mangrove cover. Now, as far as the exam is concerned, you need to, since mangrove is mentioned here, and I'm sure you must have gone through your environment syllabus, so you would know that mangrove is one species that we clearly are obsessed with. Why are we obsessed with it? Because it is one of the most necessary forms of plant life. Like for example, in the Sundarbans, we see that it is because of the mangroves that the life of various humans as well as animals is maintained. Just because the presence of mangrove prevents the kind of flooding that can otherwise happen, or the kind of nutrition that it is providing to various organisms. Therefore, we see that we continuously talk about mangrove cover. We keep an eye eye on it. Like even we do talk about all sorts of trees, but mangrove is more specially mentioned. So mangrove is also one species that we keep a separate track of when we do the forest survey as well every 2 years. All right, so you have to know a few things about mangrove. What is the temperature that is required for its growth? What kind of water is present there? What are the various benefits of mangrove? And what is the area that it covers? And if it has increased or if it has decreased, that kind of thing. Here, the survey is mentioning that it has increased by 364 square kilometer in 2021 as compared to 2013. All right, so there has been an increase in the cover of mangroves. Then various efforts to increase these areas have also been mentioned, like for example, National Coastal Mission Program,
or the CRZ notification, or the EPA, Wildlife Protection Act, Indian Forest Act. See, all these acts, for these acts, I would suggest, already, I'm sure you people have studied these, but just a reminder, since the exam is already around the corner. So I would suggest you that the first thing you need to know about these is, the first thing that you should know is the ministry that is associated with these acts, like the ministry that is implementing. If there is a specific committee in any of these, if there is some specific person who is associated with this, or if there is some kind of a new addition that has been made, then there are certain guidelines. Like, for example, when you will talk about the CRZ notification, you must have read about the the how many kilometers away you have to be from the water line. All right, so if it's a village, then where should the village end? Or if it's a recreational beach, where should the shops be limited to? So those kind of distances you have to maintain. What kind of limits are prescribed for rural areas? What kind of limits are prescribed for urban areas? Those are the kind of things that you need to do for these, as well as for any other environment related act. With respect to environment, you should know exactly which authority is the implementing agency. All right, so that should be the first question. Then if there is something specific about certain act, obviously you need to remember that. Also, there are certain acts that it seems like there are certain things that must be associated with certain act, but then they have been put up under some different act. So those kind of things you need to remember. Whether if somebody has been cruel towards the animal, which is the act under which they can be punished, etc. All right, so those kind of things that are the ones that you have to study. A few things have been mentioned here that I would suggest you look into. I think you people must already you people must be aware of it. First of all, the word that is mentioned here is carbon stock. Carbon stock is the amount of carbon sequestered from the atmosphere, stored in biomass, deadwood, soil, and litter in the forest. What is sequestered? It has been captured from the atmosphere and then it is stored in the living things. All right. Deadwood, soil, and litter in the forest. Litter in the forest, जो वहाँ पे leaves गिरती हैं और etc. जो ये चीजें होती हैं. Among the Indian states, Arunachal Pradesh has the maximum carbon stock in forest. Per hectare forest carbon stock is maximum in Jammu and Kashmir. All right. So these are few things that you can remember. These are the kind of things that are directly mentioned here, and they can be directly asked. All right. Sometimes questions that are asked, they ask you to arrange states in an ascending or descending order. That is the from increasing to decreasing or decreasing to increasing. So at least if you remember the one with the highest amount or with the lowest amount, like depending upon what kind of quantity we are talking about. Like, for example, least pollution. So the number one will be the one with the least pollution, if you're talking about pollution. But if you're talking about trees or carbon stock, etc., then you would have to know the state, or at the first place will be the one with the highest or the maximum achievement. So these kind of things you can remember. They help you in answering the questions, because you cannot exactly remember the list in every case. All right. The next thing that it has mentioned is the river conservation and rejuvenation. The government is working on mapping and converging the 5 P's. That is people, policy, plan, program, and project. So these kind of things you can just you read these things, but these kind of lines are the ones that I would suggest will help you in mains. Like when you are writing an answer for environment in mains, then these kind of things you can make it into, like, you can write 5 P's, and then you can put it up in a diagrammatic manner, that these are the 5 P's that the government should follow. So there are certain points that you must remember. They can be easily adding value to your answers. All right. Then we have the NDCs. Now, NDCs is something that I'm sure you people must have come across while reading the environment. The government of India submitted its updated NDC under Article 4 of the Paris Agreement. Updation of the NDC every 5 years by each party. What are they trying to tell us? They are trying to tell us that we had mentioned certain goals that we want to fulfill. We want to fulfill these goals so that we are capable of maintaining the temperature in the range of 1.5 to 2. We are trying to maintain the climate as much as is possible. Earlier in 2015, we had mentioned certain goals, and now we have updated them. So what are we doing here? Like, for example, cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuels
to reach 40% by 2030. Now, what have we done? We have made this into 50%. Earlier, we said that the kind of energy that we are generating from the non-fossil fuel, we will be generating 40% at least from the non-fossil fuel. Now, what we are trying to do, we are trying to tell the world that we will be generating 50% from the non-fossil fuel. So these are the ones that have been written here. Reduction in the emission intensity of GDP by 33 to 35% compared to 2005 levels by 2030. Now we are mentioning 45% by 2030. Then carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent. The same thing equivalent through additional forest and tree cover by 2030. All right. So the kind of progress has been mentioned here. More important than the progress is what has been done. All right. So NDC, this is something that you should remember. You should remember another thing that I would suggest that you people search. I would have told you, but then there are 5 things that you need to remember. Those things are known as the Panch Mitra. Okay, Panch Mitra. Excuse me, ma'am. Yes. Can you change the orientation of the screen? You want it in landscape? Yes, ma'am. Okay, 1 second. Are you people able to see? Yes, ma'am. Is Thank you. It's okay. Okay. So this is one term that I would suggest that you people search for when you will be studying NDCs. Actually, these are 5 things that have been suggested and that our Prime Minister himself mentioned that these are the things that we will be doing. 3 of these are mentioned already here, and then we will go ahead and you can read 2 more of these. The aim is actually to get a net zero. Now, what is net zero? We are trying to come to a place wherein our emissions are reduced as much as is possible. All right. So that is our aim. For that, the Prime Minister had introduced the term Panchmitra. Okay. So the next thing that we have here is the transition to renewable energy sources. As per the Renewable Energy 2022 Global Status Report, during the period 2014-21, total investment in renewables stood at this amount. Okay. So this is something, abhi isme se, what do we need to remember? That there is something like Global Status Report of the renewable energy sources. What are they talking about? They are talking about that the likely installed capacity by the end of 2930 is expected to be more than 800 gigawatts, of which non-fossil fuel should be more than 500 gigawatt. Why have they mentioned it? Because this is what we have been talking about, to control the climate change for a very long time. You people must have read about how we have been talking about changing certain mechanism of production of energy. Like, for example, we have been talking about reducing the usage of non-renewable energy and increasing the amount of solar energy that we use, water that we use, etc. So in a way, this will supplement that idea. All right. The next thing that we are talking about is green hydrogen. The government has approved the National Green Hydrogen Mission. Now, this is something very important, and this you need to study. Green Hydrogen Mission is one mission that has been created so that the fuel that we are using releases least amount of carbon dioxide. When we use this, the byproducts are such that they do not allow the temperature to rise. All right. So green hydrogen is one of the most important component that we people are talking about. To ensure that we are trying to control the rise in temperature. Now, what is it mentioning? The government approved the National Green Hydrogen Mission to facilitate demand creation, production, utilization, export of green hydrogen, mobilization of 8 lakh. All these things you just have to read through. You cannot, and you should not remember rupees 8 lakh crore of investment by 2030, etc. What you need to know is what is green hydrogen in itself and what is the mission. All right. Then a recent report by the International Renewable Energy Agency suggests that the cost of electrolyzers is crucial for making green hydrogen economically viable. Okay, so as such, like one of the main problems with green hydrogen is that it is expensive. We want to use more and more of green hydrogen, and for that we also want that the public transport should run on it. Delhi has also been one of those states where we see that there has been a great focus on green hydrogen, but then the cost benefit is something that we are looking into. And for that, we see that International Renewable Energy Agency has mentioned that we can, we need to look into the electrolyzers.
All right. So that is why this is mentioned here. In this topic, what you need to know is what is green hydrogen and what is green hydrogen mission. Green hydrogen, what is green hydrogen is something that you need to know quite better in a good manner. And then there are other kinds of hydrogen also. It just simply depends upon what is the raw material from which hydrogen is produced. Like for example, there is gray hydrogen, there is blue hydrogen. So the only difference between these is the material, is the raw material that was used to produce the hydrogen. So that's something which acts as a basic difference between these different types of hydrogen. Then we have, know the terms, you would see that there is a term called electrolyzer. The electrolyzer is an apparatus that produces hydrogen through a chemical process. The process is known as electrolysis, capable of separating the hydrogen and oxygen molecules of which water is composed using electricity. Now, hydrogen produced in the sustainable way, that is without emitting carbon dioxide into the atmosphere, can be the basis for decarbonized economy. All right. The second thing that that has been mentioned here is the finance for sustainable development. Now we have been reading that the most important focus of the government of the world, of the entire world, is to have sustainable development. All right. So the first thing that we have come up with is green bonds. Now, what are bonds? We read about it in the last class also, that these are the financial instruments through which the money is transacted between different entities. Now, what are green bonds? Green bonds will be the ones in which the underlying entity would be a green project, would be a green entity or a green project, in the sense that it will be the bond that will be associated with a process or with a company or with an institution that is working in such a way that it is not adversely impacting the climate. So what is happening here is that green bonds are financial instruments. These are simply mentioned as financial instruments that generate proceeds for investment in environmentally sustainable and climate suitable projects. This is something that one should know. By this time, I'm sure आप लोगों को थोड़ा idea होगा भी इसका. But this is the definition that it has been providing. Now, IMF data indicate that green bonds of value around $620 billion were issued across the world in 2021. ये एक आपको just to read this kind of a thing. This is not some data जो कि बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है. Then the union budget, ये हमें पढ़ना है. The union budget 2022-23 announced the issue of sovereign green bond. Now sovereign bond क्या होते हैं? जो कि government produce करती है. तभी हम उनको sovereign कहते हैं. ओके अभी कौन से वाले बॉन्ड प्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट? सो ये गवर्नमेंट बॉन्ड है क्योंकि ये सोवरेन है, ग्रीन है क्योंकि ग्रीन प्रोजेक्ट्स वाली बात हो गई, और फिर ये बॉन्ड्स है. ठीक है, तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स प्रोड्यूस करने के लिए द यूनियन बजट टॉक्ड अबाउट दिस इन 2022-23. All right. Then the next point is RBI auctioned 2 tranches of 4,000 worth crores of bonds in 5 years and 10-year category. All right. तो RBI ने क्या किया है? ऑक्शन किए हैं 2 तरह के बॉन्ड्स. All right. 5-year वाले भी और 10-year वाले भी. क्योंकि if there are bonds, then they will have a validity. So these are the 2 different types of. ये आपको एक तरह से याद रखने वाला point है. Okay. Then we have regulatory framework for issuance of the green debt security. RBI has incentivized bank lending towards greener industries and projects. For example, renewable energy projects have been included under the priority sector lending. Now, this is one point that you should remember. Then the second point that you should learn from here is what is priority sector lending. Priority sector lending actually is a basic mechanism of giving loans by the banks to those sectors or those areas of the economy that need more help. Like, for example, for education, they would give money. All right. So why would they give money? Because they want education to improve. In this priority sector lending, now another sector has been added, which is the renewable energy project. All right. So this is something that you should remember. And then you should also know what other areas are there in the priority sector. All right. Then SEBI introduced the regulatory framework for the issuance of the green debt security as the mode of sustainable finance under the erstwhile SEBI regulation 2008. What is it telling us? It is saying that SEBI has also introduced the regulatory framework for the issuance of the green debt securities. Now the bonds are being produced. Therefore, there has to be a regulatory framework. So SEBI has done that. And how has it done it? It has done it in the SEBI issuance and listing of debt security regulation 2008. ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको. Then we have investing in resilience for sustainable development. SEBI has been one of the early adopters of sustainability reporting for listed entities and requires mandatory ESG related disclosure for the top 100 listed. This is something
जो कि in the last 2 years we have been talking a lot about it. Now, what is ESG related disclosure for the top 100 listed companies? Actually, the thing is that we have been concentrating too much on the sustainable development. Now, for the sake of sustainable development, what are we trying to do? We are trying to look into the projects, and we are asking those companies that are huge companies to tell us how they are impacting the environment. Therefore, we are talking about the environment, we are talking about the sustainable development, we are talking about the governance in such a manner such that the development that is being produced in the world as such by these companies, it should be environment friendly, it should be sustainable kind of a governance. All right. So the 100 top listed companies kaun si hogi? Listed companies are the ones that are there in the share market. They have been listed. Like for example, one of the major companies जो हमारी country की list हुई थी, पहले बाहर जाकर के list हुई थी, उसमें Infosys आती है. वो Infosys की बहुत बड़ी achievement मानी जाती है. All right. तो जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज है हमारी कंट्री की, उनको कहा गया है कि आप बताएंगे, ESG रिलेटेड डिस्क्लोजर करेंगे. ऑलराइट. अब आता है हमारे पास में सेबी हैज इश्यूड न्यू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. देखिए, अगर देखा जाए तो व्हाट इज हैपनिंग हियर कंटिन्यूअसली, be it the government directly or be it through RBI or be it through SEBI, what is happening is that continuously through these different mechanisms that we are reading the names of different acts, we are reading the name of different schemes. The aim is to make the development sustainable. Now, making the development sustainable simply just indicates that what we are trying to do is to ask these entities, the industries, to work in a climate friendly manner. So again, वही वाली चीज हो गई. SEBI has introduced new sustainability reporting requirement. Report करने का नया requirement अब बताना पड़ेगा. They will have to tell how they are dealing with things. कैसे कर रहे हैं? Under the business responsibility and sustainability report, which are in line with the principles that have been mentioned in the national guidelines on responsible business conduct. So very easily one can understand. Okay. The second thing that has been mentioned here are the major decisions that were taken at COP27, जो कि इजिप्ट में हुई थी. देखिए, अभी क्या हुआ, सबसे सिग्निफिकेंट चीज जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के होती है, वो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए, जो ये COPs होती है. UNFCCC वाला एक हुआ था, जो रियो समिट के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. उसके बाद बहुत सारे COP होते रहे. ओके. उसमें से जो हमारे पास लेटेस्ट वाला है, उसमें आ गया COP27. इसमें कुछ तरह की चीजें आई हैं. यहाँ तो बहुत कम मेंशन्ड है. आपने एनवायरनमेंट के लिए जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में आपने पढ़ा होगा. इवन करंट अफेयर्स में आपने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा होगा. बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर, जो कि आपको यहाँ से इंडिकेशन, यू विल गेट एन इंडिकेशन फॉर व्हाट ऑल थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, असिस्टेंस टू लॉस एंड डैमेज. It was decided to establish new funding arrangement for assisting developing countries vulnerable to the adverse impact. क्यों हम बार-बार ऐसी बात करते हैं? देखिए, जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये वो वाली है जहाँ पे क्लाइमेट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है. इसी में अगर हम देखेंगे, जैसे कि मानिए हम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपॉन द स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स, ठीक है, SIDS जिनको बोलते हैं. Why are we continuously doing that? We are talking about them because these are the ones that are highly vulnerable. थोड़ा सा वाटर का लेवल राइज होगा थोड़े से टेम्परेचर की वजह से, एंड दे विल बी स्वेप्ट अवे. वहां पे अच्छी खासी पॉपुलेशंस है. ये ज्यादातर वी हैव मोस्ट ऑफ दीज इन द इंडियन ओशन. वी हैव सो मेनी ऑफ दीज इन द इंडियन ओशन, इन द पैसिफिक ओशन. तो हम वहां पे, दैट इज व्हाई वी कीप टॉकिंग अबाउट दीज डेवलपिंग कंट्रीज. ऑलराइट. देन ग्लोबल गोल ऑन adaptation. COP27 saw progress on adaptation, with governments agreeing on how to move forward on global goal of adaptation, which will be concluded at 2028 वाला COP. ठीक है. क्या बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है. सिंपली बोल रहा है कि गवर्नमेंट्स ने बोला हमारे को बात करनी है आगे भी. ओके. फिर फंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं. ड्यूरिंग COP27 it was also recognized that the target of $100 billion per year is yet to be achieved. ये हमारा एक प्रॉब्लम है. हमने बहुत पहले ये बोल के रखा था, but we are not doing that. Okay, so ये एक तरह से एक प्रॉब्लम को भी हमने रिकॉग्नाइज किया. Then COP21 decided that prior to 2025, a new collective quantified goal on climate finance from a floor of $100 billion per year shall be set. Okay, ये वाले पॉइंट्स थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे. नॉर्मली मैं आपको आई कीप टेलिंग यू दैट यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर स्पेसिफिक डेटा, स्पेसिफिक अमाउंट, बट दीज आर important. Because we are continuously mentioning that the most important requirement right now for climate change, for tackling climate change, is money. We don't have money, and continuously we are making new funds. Every other time we come up with some new fund that we dedicate towards climate change, and at the end nothing happens, as is mentioned here also.
कि हमने फंड तो बना दिया, पैसे उसमें जा ही नहीं रहे, कोई दे ही नहीं रहा है. Then agriculture and food security agreement on joint work on implementation of climate action on agriculture and food security to be conducted over 4 years. ठीक है, 4 साल के ऊपर. It was decided to set up just transition and mitigation work program. Okay, so these are a few things that have happened there. You need to, इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको इसमें सिंपली याद रखना है कि क्या क्या बातें की इन लोगों ने. इंपॉर्टेंट क्या है, हमने बात की थी, इंडिया पार्टिसिपेट जब किया तो हमने वी टॉक्ड अबाउट मेन स्ट्रीमिंग द थीम ऑफ लाइफ. ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है. लाइफ क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इंडिया सबमिटेड इट्स लॉन्ग टर्म low carbon development strategy. Okay, LTLEDS. So this is also something that is important that you need to keep in mind. अब LTLEDS हमने क्या बताया है, हमने दे तो दिया लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. क्या है, इंडिया एस्पायर्स टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. आप लोगों ने देखा होगा फेम स्कीम के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा. हाँ, देयर इज अ स्कीम कॉल्ड फेम. ठीक है, फेम स्कीम. इसका इनफैक्ट इसके ये अलग अलग फेजेस में आ रही है. इसके अंदर क्या हमारा एम है, द एम इज टू मेक आवर व्हीकल्स इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. एंड उसमें पहले हम शुरू कर रहे हैं कि हम पहले हमने बात की थी एथनॉल ब्लेंडिंग की भी. फिर अब हम स्लोली वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन जहां हमारे व्हीकल्स पहले कुछ परसेंटेज, फिर आगे चल के एक हाइब्रिड तरह का इलेक्ट्रिक व्हीकल, फिर इवेंचुअली हमारे व्हीकल्स हो जाएंगे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल. उसके लिए लेकिन प्रॉब्लम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट वी हैव इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट जस्ट के डेवलपमेंट ऑफ द व्हीकल्स, जिनका उस तरह का इंजन होगा, but simultaneously we will also have to develop a lot of infrastructure. Like for example, if you have an electric vehicle, you will need a place to charge it also. So those kind of things. Okay, then we have climate resilient urban development will be driven by smart city initiative. Okay, smart city initiative आपको पता होना चाहिए क्या स्मार्ट सिटी वाला जो टॉपिक है, that you should know a lot in depth. ओके, क्योंकि ये हमारा वन ऑफ द प्राइमरी प्रोजेक्ट्स है जो इस टाइम पर चल रहा है. आहिस्ता आहिस्ता करके हम पूरी कंट्री को इसमें, मतलब वी वांट दैट एवरी अदर सिटी, हर जगह पर वी आर ट्राइंग टू डू दैट. सो देयरफॉर इसमें आपको करना पड़ेगा दिस, यू विल हैव टू रीड. हेलो, इज एवरीवन एबल टू सी मी as well as the shared page? Yes, ma'am. Okay, so let's begin again. All right. Okay, so we were talking about COP27. Now, we have been talking about how LTLDS, India has submitted its long-term strategy for tackling problems of climate change. All right. So what we are trying to do is actually to make our urban development climate resilient. All right. We are trying to focus on rational utilization of national resources with due regard to energy security. Again, the same thing is being talked about, that we want development, but we also want development such that our national resources are saved, such that we are using our natural resources in such a manner that is sustainable. A threefold increase in nuclear capacity by 2032 has also been put up, whereas you will read that many of the countries, especially the ones in the Western world, have also decided that they will be giving up their nuclear capacity in terms of generating energy. They will be giving it that up. They have been thinking about that also. But for us, what we have decided is that rather than using other fossil fuels, etc., we will be going for a threefold increase in our nuclear capacity by 2032. All right. Then we have India's initiative at the international level. First of all, the one that we are talking about is ISA. Now, this is extremely important for us. Why? Because it has been developed with India along with France. All right. The headquarter of ISA is also in India, in Gurgaon. So ISA becomes one of our own, as it's one of the most dear initiatives of India. All right. Because it has been initiated by us. The headquarter is also here. Certain recent developments are there that you can go into, but you should know exactly what is ISA. A question has already been asked about it also, so you should know exactly. Earlier, it was only meant for those countries that were between the tropics. Now it has been extended to everyone who wants to become a part of it. That is why, in fact, this is being mentioned here also. India's initiative in the international arena. So first is ISA. The second is Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Okay. The third thing that we have here is Leadership Group for Industry Transition, Lead ID Group. Okay. Now, Coalition for Disaster Resilience Infrastructure is something that I would suggest that you people study in a good detail while, studying environment.
Disaster resilient infrastructure connect a network of networks enabling stakeholder access to knowledge, resources, and collaborative opportunities. Infrastructure for resilient island states. Why have we mentioned this? We are mentioning that it has been launched by our Prime Minister only. ठीक है, along with the Prime Minister of UK, Australia, Fiji, Jamaica, Mauritius, we are already talking about this problem that the world is about to face and is already facing in many places, where the countries that have islands or are island countries in themselves, they are facing this problem wherein they are they might lose their identity, they might lose their land because of the climate change, because of the rise in the level of water. All right, then we have global flagship report on disaster and climate resilient, then lead IT group launched by India and Sweden with the support. इसमें इस तरह में आपको क्या याद रखना होता है, launched by whom? इंडिया है तो इंडिया के साथ में कौन है, तो स्वीडन है, with the support of WEF. ठीक है, तो इस तरह का कुछ चीजें आपको याद रखनी है, एंड ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडिया ने किया है, सो मोस्ट डेफिनेटली दीस आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. फिर आता है कि हमने यहाँ पे दे हैव मेंशन्ड की आउटकम्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ COP 15 टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD करके भी UNFCCC के बारे में आप पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, आप देखोगे उसके साथ साथ में CBD भी निकला था. जब CBD निकला था उसका भी अपना COP चलता रहता है. COP सिंपली क्या होता है, कोई सा भी अगर अग्रीमेंट हुआ है या कुछ भी इस तरह की हमने कॉन्फ्रेंस ऐसा सोचा है कि कोई एक कॉन्फ्रेंस है जो कि बार बार होगी, तो वो हर अलग अलग अग्रीमेंट के लिए की जाती है, और जब वो कॉन्फ्रेंस होती है उस पर्टिकुलर नेम के अंडर, तो फिर हम उसको COP कहते हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ऑल दोज कंट्री दैट आर पार्टी टू दैट कॉन्फ्रेंस. जैसे UNFCCC का अलग COP चल रहा है जिसका COP 27 हमने पढ़ा, वैसे CBD करके जो रियो में निकला उसका हमने दूसरा पढ़ा, वो हम देख रहे हैं COP 15. तो उसमें क्या क्या है, इफेक्टिव कंजर्वेशन मैनेजमेंट, रिड्यूस टू नियर जीरो अपना लॉस ऑफ एरिया ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस, रिड्यूस बाय हाउ बोथ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स एंड द ओवरऑल रिस्क पोज्ड बाय पेस्टिसाइड्स एंड हाईली हजार्डस chemicals. So these are the kind of things that they have suggested. ग्लोबल फूड वेस्ट को कम करेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज जो जाते हैं उनको बढ़ाना है. सिंपली देखें कि अगर आपको एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको आइडिया होनी चाहिए. उसके अंदर बेसिक चीजें क्या है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो अगर कहीं पे लिखा होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन मीटिंग हुई, उस सर्टेन मीटिंग में हमने बोला कि पैसे ज्यादा होने चाहिए, तो ये तो एक नेचुरल चीज है, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, तो वो दैट इज समथिंग दैट यू कैन कीप इन योर माइंड. देन अभी हमारा एक फोकस है किसी भी तरीके से टेम्परेचर को रिड्यूस करना. टेम्परेचर को रिड्यूस करना अगर एम बोला जा रहा है तो वो आप इजिली गेस कर सकते हो कैसा है. कहीं पर अगर बोला जा रहा है कि हम नियर जीरो जा रहे हैं, नेट जीरो, तो आपको you should know that completely exactly if they are talking about net zero. But if they are talking about near zero, तो वो तो हो सकता है, that is something that they could have said. तो इस तरह से थोड़ा सा अगर आपको बेसिक आइडिया हो कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में, तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. एंड आल्सो वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, जब एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे आप, तो एनवायरमेंट में जो मेजर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उन मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में तो आप ऐसे भी पढ़ोगे, बट विद रिस्पेक्ट टू दोज मेजर प्रोजेक्ट्स आपको ये भी याद रखना चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे UNEP का कोई प्रोजेक्ट है, UNEP के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द होल वर्ल्ड. ठीक है, तो आपको वो पता होनी चाहिए. फिर अगर कोई इस तरह की डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं COP 27 में जो नए टर्म्स आए हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, या फिर इफ सम न्यू फिनोमिनन हैज कम अप जो कि प्रॉब्लम पोज कर रहा है, तो वो पता होना चाहिए. जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमने गार्बेज पैच के बारे में बात किया पैसिफिक में, तो वो पता होना चाहिए कि वो क्या है, पैसिफिक ओशन में वहां पर है तो क्यों है. तो एनवायरमेंट के क्वेश्चंस गेस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, पहले से तैयार हो गए. इफ यू आर गेटिंग 30 to 35 क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरमेंट, यू विल बी एबल टू गेस एटलीस्ट 20 ऑफ दोस बिफोर हैंड. थोड़ा सा मगर दिमाग ओपन करके पढ़ना है. एंड ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बिकॉज एज आई सेड 30 to 35 का तो आप दिमाग में रखें ही, कम से कम 30 तो कहीं नहीं जा रहे. All right. Then we have initiatives related to the other environmental issues. For example, conservation of biodiversity. India, अब ये थोड़ा हमें याद रखना चाहिए. India ranks 8th in the world, 4th in Asia among the mega diverse countries. Mega diverse countries के कुछ features हैं. आप लोगों ने NCERTs पढ़ी होंगी. NCERTs में दिया हुआ है कितना percentage of forest cover होना चाहिए. उसमें से कितने 1500 या कितने आपके पास species हैं.
ओके, तो उसमें से कितने डिस्ट्रॉय हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, कितने उसमें से किस टाइप के प्लांट्स को वो कंसिडर करते हैं। 3 कंडीशंस आर मेंशन्ड हियर, उसमें से एक कंडीशन 75%, एक कंडीशन 1500 और एक कंडीशन हमारे पास में आता है टाइप ऑफ ट्रीज। तो दोज काइंड ऑफ 3 थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। ऑलराइट, मेगा डाइवर्स कंट्रीज कितनी है, कौन कौन सी है, इंडिया क्यों है उसमें, इंडिया के कौन सा वाला एरिया जो है दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट मेगा डाइवर्सिटी। ठीक है, क्यों हम वेस्टर्न घाट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, नॉर्थ ईस्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो हम ये वाली बातें करते हैं, बर्मा के साथ हमारा कैसे हम कंबाइन करके नेमिंग करते हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन यू रीड दीज टॉपिक्स, आपको दिमाग वहां जाना चाहिए, you know, you should focus on those. All right, then the second thing that it is talking about is India and Nepal signed a memorandum of understanding on biodiversity. किसके साथ किया? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमने इंडिया ने नेपाल के साथ में किया है। ऑलराइट, देन वाइल्ड लाइफ, इंडिया इज होम टू 53 टाइगर रिजर्व्स इन 18 states with about 75% of the world tiger population at the global level. ये हमारे लिए this is one of our greatest achievement because there was a point in time जब हमारे टाइगर बिल्कुल खत्म हो गए थे, तो इंडिया decided that we will come up with a project. In that project we will be able to we will be able to double our tiger population. अब हमने उसमें एम रखा था 2022 का, वो हमने 18 में ही कर दिया। फिर आ गया इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट के लिए भी आपको पता है कि ये हमारे ना कुछ कुछ सिग्निफिकेंट स्पीशीज हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको यहाँ पे आई टेल यू वन मोर थिंग, देयर आर सर्टेन स्पीशीज जिनको कि हम फ्लैगशिप स्पीशीज बोलते हैं। उन फ्लैगशिप स्पीशीज जो है उनके लिए हमारे पास स्कीम्स है। ये जो हमारे मार्क्ड पर्टिकुलर स्पीशीज हैं, जैसे एलिफेंट है, डॉल्फिन है और टाइगर है, या इवन लायन को भी आप रख लीजिए, तो इस तरह की जो स्पीशीज हैं, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, these are certain species that are there in the news every year. Even if they are not there in the news, there are certain schemes that are directly made for conservation of these species. Therefore these species become extremely important. और तभी आप लोग देखेंगे कि बार बार papers, अगर previous year questions if you will be solving, you will see dolphin, dugong, elephant, tiger, these are the 4 major species, crocodile, जिनके बारे में ज्यादा बात की जाती है। ओके, तो जैसे कौन सा किस साल में कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन नहीं है, अगर आप जनरली सारी स्पीशीज का करने जाओगे तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट दीज आर फ्यू स्पीशीज जिनका आपको पता है क्वेश्चन आना है। सो लीविंग देम आउट एंड ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स, दैट इज वो आपका आपने बैलेंस नहीं किया अपनी पढ़ाई को। ऑलराइट, सो ट्राई टू फोकस ऑन दीज फ्यू स्पीशीज फर्स्ट एंड देन गो ऑन टू लर्न के अभी नया नया इस साल क्या क्या हो गया। Okay, so Indian elephant has been listed in Appendix 1 of the Convention of the CMS, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसका भी हमारे पास में CMS 13 है, गांधीनगर गुजरात। ठीक है, उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। अभी हमने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ एक्ट हुआ करता था, 1972 से आया हुआ था। द एक्ट सीक्स टू, अभी हमने उसको अमेंड किया है। द एक्ट सीक्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द स्पीशीज प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ एंड इम्प्लीमेंट कन्वेंशन। ये साइट्स करके होता है। ठीक है, साइट्स भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यू शुड नो साइट्स क्या है। All right, the act empowers the government to regulate or prohibit the import, trade, possession, proliferation of invasive species. फिर आता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक वेस्ट अभी करंटली हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उसमें क्या कर रहे हैं, बिकॉज वेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, ये सस्टेन, इनकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, तो दे रिमेन इन दी एनवायरमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उसकी वजह से फिर वो एक परमानेंट पोल्यूटेंट की तरह बिहेव करते हैं। दैट इज व्हाई वी हैव पॉलिसीज फॉर डीलिंग विद दीज। तो जैसे कितने माइक्रॉन्स का आपका प्लास्टिक होना चाहिए जो आप यूज कर रहे हो, इस तरह के फीचर्स आते हैं जो कि दे आर द पार्ट ऑफ दीज कोड्स या फिर जो डायरेक्शंस दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। अभी क्या आ गया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, एलिमिनेशन ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स। ठीक है, टू रिड्यूस पोल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू लिटर्ड प्लास्टिक वेस्ट इन द कंट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हैज नोटिफाइड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। बैन वॉज इम्पोज ऑन मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, ये वो किसका, सिंगल यूज प्लास्टिक का। ओके, सिंगल यूज प्लास्टिक को हम ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक बार आपने यूज किया, रिसाइकिल को हो नहीं रहा है, अगेन इट इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द लैंडफिल, फिर वो जमीन के अंदर रह जाता है। दैट इज व्हाई हम इसको डिस्करेज करते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेकंड अमेंडमेंट 2022 provides a statutory framework for biodegradable plastic after conforming to BIS standard and the Central Pollution Control Board certificate. ओके, फिर अभी क्या है हमारे पास में, प्रोजेक्ट चीता। यहाँ पे इन्होंने चीता के बारे में बताया। द इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया इज बीइंग डन अंडर प्रोजेक्ट चीता, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या अभी इसमें हमें एक्चुअली इसमें क्या याद रखना है, आपको खुद से पहले पता होना चाहिए प्रोजेक्ट चीता क्या है, किस ईयर में लॉन्च करने की कोशिश की गई थी। क्या बता रहे हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज
वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट की तरह ये आया. अंडर द स्कीम 8 नमीबियन वाइल्ड चीताज वर इंट्रोड्यूस्ड इन कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश. अभी इसमें क्या याद रखना है, कुनो नेशनल पार्क को पूछ सकते हैं कहाँ पर है ये. ठीक है. The cheetah was declared extinct from India in 1952. Cheetah can help restore open forest grassland. ये वाले points helpful होते हैं. यही वाला क्वेश्चन आएगा, चीता के बारे में क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद में होगा कि चीता की सिग्निफिकेंस क्या है, एंड देन दे विल गिव यू 4 पॉइंट्स. उसमें एक जैसे ये रहेगा, रिस्टोर ओपन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ये सब आप जनरली किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बोल सकते हो. इफ एवर सर्टेन स्पीशीज इंट्रोड्यूस इनटू एन एनवायरनमेंट, तो या तो वो एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी या नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी. वो चीज अगर हल्का सा भी आप पढ़ रहे हो एनवायरनमेंट के बारे में, यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट इट कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. अभी यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, रिस्टोर ओपन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन इंडिया एक्सेट्रा. ओके, हो गया ये. सो इसमें आपको इतना याद रखना है. ये वाला जो है हमारा बॉक्स, कन्वेंशन ऑन सीबीडी, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे. इफेक्टिव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, नेट नियर जीरो कर देना है. लॉस ऑफ एरिया ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस, मतलब जहां पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है उसका अगर लॉस होने के चांसेस वो हमें रिड्यूस करना है. दे रिड्यूस बाय हाफ बोथ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स एंड ओवरऑल रिस्पोज बाय पेस्टिसाइड एंड हजार्डस केमिकल. क्या कर रहे हैं हम, ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, उससे इंसेक्ट तो मर ही रहा है, पेस्ट तो मर ही रहा है, साथ ही साथ प्लांट भी खत्म हो रहा है. ऑलराइट, फिर उसके बाद वही हम कंज्यूम कर जाते हैं. Cut global food waste in half, raise international financial flows, progressive phasing out or reforming subsidies that harm biodiversity by 2030. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हम देख लेंगे. उसके बाद क्या आता है, 5th यूएन एनवायरनमेंट असेंबली जो जाती है नायरोबी में की गई, उन लोगों ने क्या लाया वहां पे, ये आपको थोड़ा याद रखना है. एंड प्लास्टिक पोल्यूशन टुवर्ड्स एन इंटरनेशनल लीगली. ठीक है, सिंपली असल में क्या है, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन नायरोबी में हुआ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का मीट, उसके अंदर हमने बोला प्लास्टिक पोल्यूशन कम करना है, इतना याद रखना है. इंडिया एंगेज कंस्ट्रक्टिवली विद ऑल द मेंबर स्टेट डेवलप अ कंसेंसस ऑन द रेजोल्यूशन फॉर ड्राइविंग द ग्लोबल एक्शन ऑन द प्लास्टिक पोल्यूशन. फिर आता है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट. अभी मैं आपको बोल ही रही हूँ, ई वेस्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बैटरी वेस्ट प्रॉब्लम है, प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम है. सबके लिए कोई ना कोई रूल्स बनाए गए हैं. अभी हमने प्लास्टिक का पढ़ा, 21 में एक आया, 22 में दूसरा आया, अभी देखिए बैटरी के लिए भी आ गया. ठीक है, किसके लिए करेंगे फिर से वेस्ट को, साउंड मैनेजमेंट के लिए. क्या है, रूल्स फंक्शन करते हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी वर्ड आप लोग कई बार यू विल कम अक्रॉस. इसका मतलब सिंपली क्या होता है कि जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, दोज पीपल हु आर डीलिंग विद इट, जो कि प्रोडक्शन में उसको ले जा रहे होते हैं मार्केट के अंदर, उन्हीं को डील करना चाहिए कि अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट की तरह से जनरेट होते हैं तो. ठीक है, तो दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन, रिसाइकलिंग, रिफर्बिशमेंट ऑफ द वेस्ट बैटरीज एंड द यूज ऑफ रिकवर्ड मटेरियल फ्रॉम वेस्ट इनटू न्यू बैटरी. द रूल कवर ऑल टाइप्स ऑफ बैटरीज, ये याद रखना है. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनता है कि वहां पे लिखेंगे इट कवर्स ओनली सर्टेन टाइप ऑफ बैटरीज. बंदा सोचेगा सर्टेन थे कि ऑल थे. ठीक है, तो ये ऑल है. ऊपर से ऑल को हम एलिमिनेट करते हैं कई बारी, एक ये भी टेंडेंसी होती है, क्योंकि एक देयर इज वन मिसकंसेप्शन अब के हिसाब से. पहले इट यूज्ड टू वर्क, देयर वाज दिस काइंड ऑफ अ ट्रिक दैट पीपल यूज्ड टू अप्लाई इन प्रीलिम्स, wherein if ever there was something where they would be where the word all would be mentioned, so people would just simply eliminate that option. But अभी वैसा हो नहीं रहा है. पिछले कुछ सालों से we are seeing that strategy does not work well. तो इसमें याद रखना है कि इसमें all ही है. Okay, all types. फिर आ गया ई वेस्ट मैनेजमेंट. ई वेस्ट मैनेजमेंट, द गवर्नमेंट नोटिफाइड दीज रूल्स अगेन 2022. salient features applicable to every manufacturer producer, सेम पिछले वाले की तरह. शेड्यूल 1 जो है दैट हैज बीन एक्सपेंडेड. नाउ 106 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इसको इंक्लूड किया गया है. सोलर पीवी के मॉडल्स जो आते हैं उनको मैनेज करने की बात हुई है, पैनल्स को, सेल्स को. प्रोविजन फॉर जनरेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द ईपीआर सर्टिफिकेट, वही जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी सर्टिफिकेट जो जाता है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. देन प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल कंपनसेशन एंड वेरिफिकेशन एंड ऑडिट हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड. तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि जो द थिंग्स दैट यू विल हैव टू जस्ट रिमेंबर. इसमें आप अंडरस्टैंड करोगे कुछ बेसिक आइडियाज कि ये स्कीम है, हम चाहते क्या है, व्हाट इज आवर एम, एंड फॉर दैट एम व्हाट ऑल कैन बी डन. एक बारी जैसे ही वो हो जाएगा ना, तो देन यू विल बी एबल टू गेस आल्सो. मगर ये सामने सामने दिए हुए हैं, तो सो दीज आर थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर. अभी यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात की. क्रिटिकल मिनरल क्या होता है, द शिफ्ट टू अ क्लीन एनर्जी सिस्टम इज सेट टू ड्राइव अ ह्यूज इंक्रीज इन द रिक्वायरमेंट फॉर क्रिटिकल मिनरल. अब प्रॉब्लम क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स हमारे पास कम होते हैं, अगर होते भी हैं तो हम ना उनको हार्नेस नहीं कर पा, निकाल ही नहीं रहे हैं. ऑलराइट, तो एक्सकवेशन करनी पड़ती है, वो नहीं हम कर पाते. इसी वजह से हम कहते हैं कि चाइना का बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंस बन गया इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि वो लोग निकाल पा रहे हैं.
हम नहीं निकाल पा रहे। अभी क्या है, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, लिथियम, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दीस आर क्रिटिकल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरीज एंड हार्नेसिंग सोलर पावर एंड विंड एनर्जी। एक आप लोगों ने सुना होगा कि जब ये कोविड चल रहा था, सो ड्यूरिंग दोज डेज वी यूज्ड टू हियर दैट people were not able to buy cars easily because क्या हो रहा था कि the delivery of the cars was delayed hugely. So फिर हुआ कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो इस वजह से था क्योंकि आजकल जो कार्स आ रही हैं उनके अंदर सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रोवाइडिंग जो AI बेस्ड हेल्प है उसके अंदर, ठीक है। और वो सारा सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई था वो रुक गया था। सो उसको दिमाग में रख करके आप इस चीज को समझिए। नाउ इन ऑर्डर टू एंश्योर द मिनरल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज क्रिएटेड अ जॉइंट वेंचर कंपनी। ठीक है, जॉइंट वेंचर कंपनी है ये, क्या, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये बहुत सालों से न्यूज में है, तो उसका थोड़ा आइडिया रखिएगा। एंड पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट ऑफ नाल्को, HCL एंड MECL। ठीक है, ये हुआ। तो द थिंग्स दैट वन हैज टू टेक केयर ऑफ वो सीधे सीधे यहाँ पे मेंशन्ड है। कुछ ये जितने भी यहाँ पे नेम्स मेंशन्ड है इनके ऊपर आपको, आप लोगों ने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, सो जस्ट ब्रश दैट थिंग अप। ये बेसिकली पूरा एनवायरनमेंट बेस्ड चैप्टर था। इसमें कुछ कुछ बहुत स्पेसिफिक इकोनॉमी वाली चीजें थी, लेकिन आज सब कुछ एवरीथिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड इंटरट्वाइंड, देयरफॉर हम वी वेंट डीप इनटू इट। सो एक तो आप ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में पढ़िए, साथ ही साथ यू पीपल शुड नो ग्रीन हाइड्रोजन एंड द अदर काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन, जितने भी अभी नए नए टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या मैकेनिज्म्स नए हैं जिनको हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करें। इसके अंदर अलग अलग तरह के फ्यूल्स, फिर आजकल हमारा एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे हम पहले फूड के प्रोडक्ट्स से बायो इथेनॉल बनाने की बात करते थे, फिर हमने बोला फूड वाला हम यूज नहीं करेंगे, हम दूसरे क्रॉप्स यूज करेंगे, जिट्रोपा एटसेट्रा यूज करने लगे। फिर हमने बोला कि एल्गी यूज करो। फिर इस तरह से क्या एडवांसमेंट है, वो जितने भी जनरेशंस हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको आई विल टेल अनदर टॉपिक ऑल्सो, जितनी भी सेल्स हैं, फ्यूल सेल्स जिनको कहते हैं, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड नो। ये वो वाले एरियाज हैं जिनसे almost every other year question will be there in the paper. Then different species जो है organisms की, so जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन होती है जिसके अंदर किंगडम होता है, क्लास होता है, जीनस होता है, ये सब होता है। उसके बारे में थोड़ा पढ़िए, और कौन किस कैटेगरी में फॉल करता है। साइंस इन टेक की बुक NCERTs में आपको वो टॉपिक्स मिलेंगे। सो वो वहां से वो देख के रखिएगा, उनके ऊपर क्वेश्चंस अब आते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में भी नाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग into the basics of organisms, be it the plant kingdom or the animal kingdom। तो थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। So this was about climate। अब अगर ये सबको comfortable रहा हो, so we will read the next two chapters। Is it fine? Should we continue? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट वी विल स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब देखिए इन दोनों में अभी तक एनवायरनमेंट में तो फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि एनवायरनमेंट एक अलग सा टॉपिक था, उसके साथ में बताना पड़ा आपको। लेकिन अगर आप 8th और 9th चैप्टर देखोगे तो ये मोर और लेस इसमें सिर्फ डेटा है, और वो डेटा दो फॉर्म में, एक तो ऐसे डेटा है कि जो डिजिट्स के फॉर्म में होता है, नंबर्स हैं आपके पास में, और दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारी स्कीम्स के नाम हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स के नाम हैं। इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, राइट नाउ लाइक टुडे वी आर रीडिंग, सो आई विल बी टॉकिंग, यू विल बी लिसनिंग टू इट। एक ये आप इसको कंसिडर करिए अपना फर्स्ट रीड। अब इसी के बाद में क्विकली आप लोग हार्ड कॉपी जो होगी आपके पास में इस डॉक्यूमेंट की, आप हार्ड कॉपी को एक बार में देख लीजिएगा, बिकॉज अभी आपने इसको ऑनलाइन देखा, क्लास में देखा, जैसे अब आप इसको हार्ड कॉपी पे देखोगे तो द सेम थिंग यू विल डू इन 10 मिनट्स। एक एक चैप्टर आपको यू विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स, और अपने हिसाब से सी when it comes to highlighting something, when it comes to knowing exactly what is important, that I am telling you while you are reading this, while you are studying with me. But what exactly is important for you to remember is something that only you know, because there might be certain facts, like if you are two friends and both of you are studying together, कभी कभी हम ग्रुप्स बना के पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है कि sometimes there are certain points that one person remembers by heart but the other person does not। तो इसमें क्या करना होता है ना, इसमें आपको बिल्कुल अपना इंडिविजुअली देखना होता है। तो इस वजह से आई ऑलवेज सजेस्ट कि एक बार आप क्लास लीजिए,
ठीक है, ऑनलाइन क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास होती है, अभी तो ये ऑनलाइन है आपकी। ये क्लास जैसे खत्म होती है, आपको अपना हार्ड कॉपी पकड़ करके उसके ऊपर अपने हिसाब से अंडरलाइन करनी चाहिए चीजें। All right, so that is the best thing that a student can do for himself or herself, because there will be several things. Abhi aap log, if I will tell you 10 points, you will remember only 4 of these when once you go out of the class, but the other 6 that you have to remember, that will vary between all of you. Different student would require आपको याद होंगे अलग 4 points और नहीं याद होंगे अलग 6 points. So that's something that is very personal for an individual. तो वो वैसे करिए. डिसाइड हार्ड कॉपी रखा करिए, क्योंकि ये एग्जाम अभी भी हैंड रिटन है, तो जब तक हैंड रिटन एग्जाम है तब तक पढ़िए भी ऑफलाइन से, ये हार्ड कॉपी से। ऑनलाइन से पढ़िए, लेकिन इस तरह की चीजों में अच्छा रहता है अगर हार्ड कॉपी होती है। सो इट डज हेल्प यू इन एग्जाम के दिन, आपको पता होगा एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है। ऑलराइट, जब ऑनलाइन कॉपीज आप पढ़ते हो, सो व्हेन इट कम्स टू द रियल एग्जाम, उस टाइम पर आपको पता नहीं होता कि आपके पास क्वांटम ऑफ सिलेबस कितना है। बट व्हेन यू हैव थिंग्स इन योर हार्ड कॉपी, देन यू नो कि अच्छा इस वाले टॉपिक में आई हैव रिड्यूस्ड माय नोट्स, व्हाटएवर आई हैड बीन रीडिंग over several months, I have reduced it to 5 pages, I have reduced it to 10 pages. तो ये चीज को आपको इम्प्रूव करना है। ऑलराइट, अब 8th और 9th चैप्टर जो है ये हम थोड़ा क्विकली कर सकते हैं। इसकी वजह से कर सकते हैं बिकॉज इसमें आपको समझना उतना नहीं है, सब कुछ आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, बिकॉज वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स में दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड टू यू। ऑलराइट, so the first thing is agriculture and food management, from food security to nutritional security. क्या हो रहा है, सारा डेवलपमेंट हमारा सस्टेनेबिलिटी को लेकर के है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है डेवलपमेंट भी हो और साथ ही साथ आज भी डेवलपमेंट हो, कल भी डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ things should be made available across all different sections of the society. So the name of the chapter is from food security to nutritional security. एक तो पहले खाना मिले सबको और वो खाना ऐसा हो जो कि न्यूट्रिशियस हो। ऑलराइट, सो दैट इज द बेसिक एम। ये हमारी कंट्री की एम बता रहा है हर चैप्टर का नाम। द चैप्टर डिस्कसेस द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड द अलाइड सेक्टर। अब एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर में क्या क्या आ जाता है, जो भी इसके साथ में रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आप देखिएगा परफॉर्मेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज सेक्टर, ये सारे इसके अलाइड चले गए। देयर इंपॉर्टेंस इन द फूड बास्केट एंड फार्मर्स इनकम, ये वो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम एक्ट जिसके बारे में पढ़ते हैं जब हम फूड के बारे में सोचते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में। ये जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि 1 2 3 नंबर याद रखेंगे हम, जिसमें कि हम व्हीट, राइस और बाकी ग्रेन्स के बारे में क्या करते हैं, बहुत सस्ता लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये ऑन वन हैंड ये हमारा एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है, बिकॉज हम बोलते हैं कि हमारी सब्सिडीज हमारा एक बहुत बड़ा बर्डन है, मगर बर्डन से ज्यादा ये भी है कि दिस इज अ सब्सिडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग पीपल अलाइव। ऑलराइट, बिकॉज आवर पीपल नीड फूड। So that's something, that is why नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो आया भी है और वो मेंटेन भी है अभी भी। अभी देखिए सिंपल डेटा है, थोड़ा बहुत हम आइडिया रखेंगे। एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग एट एन एनुअल एवरेज रेट ऑफ 4.6% during the last 6 years. ठीक है, 4.6% last 6 years में। Recent year India has also rapidly emerged the net exporter of agricultural product. Year 2022 witnessed an early heat wave during the पहले जो wheat वाला सेशन था, जब year शुरू हुआ था उस टाइम पर wheat पे adverse effect हुआ, तो बाद में ठीक हो गया। The year experienced a decline in the sown area for paddy cultivation also, क्योंकि मानसून भी खराब हुआ। तो क्या हुआ, wheat के ऊपर भी adverse impact हुआ स्टार्टिंग में जब heat wave की वजह से, और बाद में मानसून खराब हुआ तो उसकी वजह से paddy भी हमारा कम लगा है। ठीक है, लेकिन अभी भी एनुअल ग्रोथ रेट 4.6% है। अभी क्या है, एमएसपी को आप लोगों को पता है कि एमएसपी हम देते हैं कितना, क्या करते हैं हम, 23 चीजों के लिए दिया जाता है। ठीक है, फिर अब क्या हम करते हैं उसमें, एमएसपी देना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो पॉवर्टी स्ट्रिकन है। हमारे यहाँ हमें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सोशल अंडरस्टैंडिंग है हमारी, दैट इज वाई ये रिक्वायर्ड है। एमएसपी के हमारे बहुत सारे फॉल आउट भी हैं, क्योंकि जिन क्रॉप्स के लिए एमएसपी दिया जाता है फिर फार्मर्स वही ग्रो करने लगते हैं, फिर वही चले जाते हैं और वही हमारे स्टॉक्स में पड़े रह जाते हैं, फिर बाकी क्रॉप्स ग्रो नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें हमको इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फॉल आउट्स हैं एमएसपी के। अभी क्या बता रहा है ये हमें, द यूनियन बजट फॉर 2018 and 19 announced that farmers in India would be given an MSP of at least 1.5 times the cost of production. ये 2018-19 ने कहा था। ठीक है, 1.5 times the cost of production। ये इस टाइम पर जरूरी भी था, क्योंकि यू नो कि क्या चल रहा था इकोनॉमी में हमारी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है हमारे पास में, द गवर्नमेंट हैज बीन इंक्रीजिंग द एमएसपी फॉर ऑल द 22 खरीफ, रबी एंड द अदर कमर्शियल crops at the rate at least 50% since the agriculture year 2018-19.
ठीक है, ये भी हमारे पास सिंपल डेटा है। अब आता है एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या हो गया? असल में हमारे फार्मर्स जो इनके पास मनी नहीं है, हम बोल रहे हैं पॉवर्टी स्ट्रिकन है, तो क्या हम कोशिश करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि या तो उनको लोन्स आसानी से मिले, या अगर उनको इंश्योरेंस हो सकता है तो इंश्योरेंस दे दे, या तो हम चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर आकर के उनकी हेल्प करे, या हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो बनी हुई हैं वो उन तक अच्छी तरीके से पहुंच जाए। तो अलग अलग तरीके से हमने हेल्प करने की कोशिश की है। So the first thing that we have is the Kisan Credit Card Scheme. It was introduced in the year 1998 for the farmers to empower them to purchase agricultural products and services on credit. On credit मतलब कि आप जाओगे, आप ले लोगे, और फिर वो एक तरह से मतलब लोन की तरह से आप लोगे उसको, ठीक है, उसी टाइम पर आपको पे नहीं करना है। अच्छा, टिल नाउ बैंक्स ने बहुत सारे इशू किए, ये इन्होंने अपनी सिर्फ सक्सेस स्टोरी बताई है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉइंट क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द केसीसी फैसिलिटी टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स इन 2018-19। ओके, किसान क्रेडिट कार्ड पहले एग्रीकल्चर फार्मर के लिए बनाया गया, फिर अलाइड सेक्टर को भी दे दिया गया, ठीक है। Then we have modified interest subvention scheme MISS to provide short-term credit to farmers at subsidized interest rates. Then we have agricultural credit flow. It was about 13% more than the target. Private investment भी increase हो गया 9.3%. Okay, simple data है जो आपको याद रखना है। Credit flow भी बढ़ गया, private investment भी बढ़ गया, modified interest subvention scheme. अच्छा, interest subvention scheme क्या होती है? ये होती है जिसके अंदर आप सब्सिडी दे देते हो इंटरेस्ट के ऊपर। मतलब देखिए, जो इन द लास्ट क्लास ऑल्सो वी रेड अबाउट, जब हम 4th चैप्टर कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि जो एक सर्टेन रेट होता है जो कि इकोनॉमी की हालत के बेसिस के ऊपर डिटरमाइन किया जाता है, कि जितनी अच्छी इकोनॉमी चल रही होगी उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन किया जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा वेलफेयर डिमांड करती हैं जगहें, वहां पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को इस तरह का कुछ करना पड़ता है कि इसको मॉडिफाई करने पड़ते हैं अपने इंटरेस्ट रेट को, जैसे कि फार्मर्स के केस में। अब वहीं पर हम देख रहे हैं, देखिए फार्म मैकेनाइजेशन क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है इंक्रीज करने में प्रोडक्टिविटी। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म, स्टेट गवर्नमेंट आर बीइंग असिस्टेंट ट्रेनिंग इन डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्रीकल्चर मशीनरी, हेल्पिंग फार्मर्स प्रोक्योर वेरियस फार्म मशीनरी। टिल नाउ अभी ये तो इनका सक्सेस स्टोरी है। क्या बता रहे हैं? फार्म को मैकेनाइज, क्यों? क्योंकि फार्म मैकेनाइजेशन हमारी एक एम रही है, तो ये बता रहे हैं कि कितना हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिक एंड नेशनल फार्मिंग अगेन समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेंशन किया है, सिक्किम जो है वो हमारी कंट्री का पहला ऐसा स्टेट बन गया जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। अब सिक्किम के अलावा भी हम देख रहे हैं बहुत सारी और जगहें जो है वो भी ऐसा करने की कोशिश में है, जैसे कि हम देख रहे हैं त्रिपुरा हो गया, उत्तराखंड हो गया। ओके, अब ऑर्गेनिक फार्मर इंडिया जो है ना, इंडिया के अंदर 44 लाख ऑर्गेनिक फार्मर है, ये हाईएस्ट है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम द इकोनॉमिक सर्वे हैज मेंशन्ड। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बीइंग प्रमोटेड थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशंस बना देते हैं ताकि उनकी वॉइस मिल जाए उनको। फिर क्या होते हैं, बहुत सारे जैसे सिविल सोसाइटी होगी या कुछ इस तरह से जो ना सोशली अवेयर लोग होते हैं, वो जाते हैं, वो इनके लिए वो गवर्नमेंट के एक तरफ गवर्नमेंट से बात करते हैं, एक तरफ फार्मर्स से बात करते हैं, उनके क्रॉप्स जो होते हैं उनकी सेल को बढ़ाने की के अलग अलग प्लान्स करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दे विल हेल्प देम मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। अब आपके पास यहाँ पे कुछ स्कीम्स मेंशन्ड है, ये आपको पढ़नी है और ये इंपॉर्टेंट है। परंपरागत कृषि विकास योजना हो गई, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए इसमें खुद से हाईलाइट भी किया है दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट इन अ क्लस्टर मोड। क्यों क्या कर रहे हैं? बहुत सारी जगहों को हम क्लस्टर्स का डेवलपमेंट हम किस लिए करते हैं, ताकि देखिए कहते हैं आपको एक इंसान, फॉर एग्जांपल किसी इफ somebody comes to your home, so you have to be a good host and you will be serving tea to them. Now if 10 people come to your home, you will again be serving tea to them. So क्या होता है कि if one person comes, even then you are putting in effort. If 10 people come, even then you are putting in efforts. So आप को लगता है कि एफर्ट तो सेम लगा, इवन दो इन वन इंसिडेंट ऐसा हुआ कि लोग कम थे और एक इंसिडेंट में ज्यादा थे। सेम इज द केस विथ स्कीम्स ऑल्सो। सो आप एक बार अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, कोई प्लान बन रहा है एंड इट इज हेल्पिंग 10 people, इट कैन ऑल्सो हेल्प 100 people, क्योंकि द बेसिस दैट विल बी डिजाइंड फॉर 10 people और 100 people विल बी द सेम। तो दैट इज वाई हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सिग्निफिकेंट स्कीम्स है उनको हम क्लस्टर मोड में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹50,000 पर हेक्टेयर फॉर 3 years इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर, ठीक है। फिर ये जो हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए किया, दैट इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ नीश क्रॉप्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। नीश क्रॉप का क्या मतलब हो गया? कुछ ऐसे क्रॉप जो कि वहीं पे ग्रो होते हैं, ठीक है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इट इज अ सब स्कीम ऑफ ये परंपरागत कृषि विकास योजना। ओके, इसमें क्या कर रहे हैं हम? इसमें हम बोल रहे हैं फार्मर्स को कि आप अपने ट्रेडिशनल जो आपका मेथड रहा है ना, परंपरागत जो आपकी ये रही है फार्मिंग की टेक्निक, उसको यूज करिए। उसी का जो ये सब स्कीम है, इसके अंदर हम इनको कह रहे हैं बहुत सारे अपने ट्रेडिशंस को यूज करो, जैसे कि
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को यूज करो। अभी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आप कुछ भी एक्स्ट्रा यूज ही नहीं करते हो, सब कुछ नेचुरल, ठीक है। कोई ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो ये नॉर्मल खर्चे होते हैं जिसमें के जिसके रीजन की वजह से द फार्मर्स आर मोस्टली इन डेट, उस तरह की चीजें यूज ही नहीं करनी है, सब कुछ नेचुरल तरीके से करना है, ठीक है। अब आ गया देखिए जैसे मिलेट्स है, यहाँ पे हम पहले मिलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो यूनाइटेड नेशन है उसने अपने 75th सेशन में ये बोला कि 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। मिलेट के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मिलेट के ऊपर क्वेश्चन आने के मतलब ऑलमोस्ट पूरे चांसेस हैं। मिलेट्स आर स्मार्ट फूड विद हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, दीज आर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड अलाइन विद सेवरल यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक होता है उसको बोलते हैं बाजरा, ठीक है। बाजरा इज वन मिलेट बिसाइड्स बाजरा, ये तीनों अलग अलग भी हैं, ठीक है। बाजरा, जवार एंड रागी, ओके। बाजरा, देन दिस विल बी जवार एंड दिस विल बी रागी। तो ये जो है ये आपके तीन मेन मिलेट्स हैं और इनकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अगर इसका 40 है, इसका 50 सेंटीमीटर है तो इसका 60, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। बाजरा, जैसे जैसे बाजरा में आगे चलोगे वैसे वैसे वाटर का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, ओके। Now, India produces more than 50.9 million tons as per fourth advanced estimate of millet, which accounts for 80% of Asia's and 20% of the global production. Global average yield इतनी है, India has a higher average yield, ठीक है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि इसमें इंडिया की हायर है, ग्लोबल एवरेज से इंडिया की हायर एवरेज यील्ड है मिलेट्स के केस में। तो तभी हम हर जगह पे जाकर के मिलेट को प्रमोट भी करते हैं, इट हैज ट्रेडिशनली बीन अ पार्ट ऑफ आवर डाइट आल्सो। बाकी इनिशिएटिव में देखिए पीएम किसान स्कीम है हमारे पास, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कि आपको टिप ऑफ द टंग पे याद होनी चाहिए। दीज आर नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सिर्फ इसमें मेंशन्ड है, बट दीज आर द वंस दैट आर रनिंग द कंट्री। अगर आप देखेंगे जैसे कि नैम है, ई नैम स्कीम हमने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसके जरिए क्या होता है, हम बोलते हैं बहुत लीक होता है हमारे फूड मार्केट में, फूड तो बहुत होता है लेकिन तब भी लोगों तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग जो जाती है ये हमारा एक बिल्कुल साइन कॉन ऑन बन चुका है ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो रिसेंट ईयर्स में हमारी रही है, ठीक है। तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। फिर आता है जी अलाइड सेक्टर के बारे में। अलाइड सेक्टर में हमने क्या पढ़ा, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एक्सेट्रा। तो लाइफ स्टॉक के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। कैसे इंक्रीज हो गया, 7.9% अगर देखा जाए पिछले 5 सालों का के हिसाब से। फिशरीज एनुअल इसकी भी ग्रोथ अगर देखेंगे 7% की होती रही है। It has a share of 6.7% in total agriculture जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। डेयरी सेक्टर एम्प्लॉय कर रहा है मोर देन 8 करोड़ फार्मर्स, डायरेक्टली इज मोस्ट प्रोमिनेंट एग्रेरियन प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्रेरियन, इसको वन भी नहीं लिखा है, इसको लिखा है मोस्ट प्रोमिनेंट एग्रेरियन प्रोडक्ट, मतलब देखा जाए तो इसमें हमें थोड़ा पता होना चाहिए। इंडिया, अब यहाँ पे असली याद रखने वाली चीज है, इंडिया क्या, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, रैंक्स थर्ड इन एग प्रोडक्शन, रैंक्स 8 इन मीट प्रोडक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या क्या है अब राइट सेक्टर के लिए, ये हमारे पास कुछ दिए हैं क्या, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। तो दिस इज समथिंग। देन वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है, सहकार से समृद्धि, अ रिन्यूड इम्पेटस वाज गिवन टू द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए अब हमारे को पता है कोऑपरेटिव सेक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पार्ट 9B हमने ऐड किया, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, तो ये सब कुछ ऐड हो गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने क्या बोला कि हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे जहां पर लोग आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, इनके एक दूसरे के साथ मिल करके अपना मनी भी अरेंज हो जाएगा इनका, एंड देन काम किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स में हम ये भी देखते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, सदर्न इंडिया में ज्यादा सक्सेसफुल हुए, ठीक है। क्या पढ़ते हैं कि नॉर्थ में उतना ज्यादा नहीं हुए, साउथ में बहुत ज्यादा हुए, तो एक तरह का डिस्पैरिटी भी है पूरी कंट्री के बीच में, थोड़ा सा एक वो गैप भी आया है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो आइडिया है वो एक्चुअली तो एंशिएंट टाइम से हमारी कंट्री में है, बट हमने इसको और भी प्रमोट किया। अब क्या हो गया, अब इसमें कुछ कुछ तरह के डेवलपमेंट्स लाने की कोशिश की गई है, दैट इज समथिंग जो हुआ है यहाँ पे। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव, देयर आर 8.5 लाख रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव इन द कंट्री, ये आपको पॉइंट कोई नहीं पूछेगा। 98% ऑफ द विलेजेस आर कवर्ड बाय प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि कोई एक ऐसी चीज है, सहकार से समृद्धि करके कोई एक नई चीज आई है, ये क्या है हमें ये पढ़ना है। फिर हम क्या देखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या, कब बनी है, किस अमेंडमेंट से बनी है, ठीक है। देन वी हैव एग्रीकल्चर का फाइनेंस, अराउंड 19% ऑफ द एग्रीकल्चर फाइनेंस कहाँ से आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ये अगर की सीधी सीधे लाइन पूछी जा सकती है कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ द एग्रीकल्चर फाइनेंस इज थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम बोलेंगे यार अभी तो बनी थी, फिर हम बोलेंगे नहीं ये तो नहीं है,
but that is not the case. 19% of the agricultural finance is through the cooperative society. Then we have the Ministry of Cooperation. Full-fledged Ministry of Cooperation was established to provide greater focus. Multi-state cooperative societies act, असली में इसके ऊपर थोड़ा focus करिए. Multi-state Cooperative Societies Act 2002 was enacted to facilitate the democratic functioning and autonomous working. ठीक है. उसके बाद the bill seeks to amend this act to bring it in line with Part 9B of the Constitution. It aims to strengthen the cooperative movement by bringing provision related to electoral reform, strengthening governance, transparency, इस तरह की चीजें. ठीक है. उसके बाद आता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. देखिए अब हम लोगों ने वी पीपल स्टडीड अबाउट द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. हमने बोला कि जितने भी एग्रीकल्चर के सेक्टर हैं, दिस इज वन सेक्टर जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था. तो अब क्या होता है, ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर विल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टैकलिंग द सेवरल डेवलपमेंटल कंसर्न. ठीक है. क्या क्या डेवलपमेंटल कंसर्न है? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल पॉवर्टी है, फूड सिक्योरिटी, फूड इन्फ्लेशन, इंप्रूव न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेजेस. ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए. ये अगर देखा जाए, ये पीटी में खुद से मेंशन करने वाले तो है नहीं, बट ये वहां पे मेंशन हो सकते हैं कभी किसी ऑब्जेक्टिव के 4 पॉइंट्स में. ठीक है. बट हमें क्या याद रखना है कि बहुत सारे डेवलपमेंट कंसर्न के डिस्पाइट में भी हम देख रहे हैं ऑप्टिमम डेवलपमेंट चल रही है यहाँ पर. गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट है, बड़े सालों से चल रही है. प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, देन कृषि उड़ान 2.0, then production linked incentive scheme for food processing industry. ठीक है. During the last 5 years ending financial year 21, food processing industry sector has been growing at an annual growth rate of कितना growth rate है? 8.3%. थोड़ा सा आइडिया रखेंगे, बाकी रहने दीजिए. अब क्या होता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें क्या बोलता है, 12.2% ऑफ द पीपल इन द रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर एम्प्लॉयड इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. ये तो हमने परसों भी पढ़ा. ठीक है ना. वी रेड अबाउट दिस इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो कि it is employing a good number of people. Now, value of agri-food export, including processed food export, was about 10.9% of India's total export during 2021. तो अच्छा खासा almost 11% का ये contribution कर रहा है. Challenges क्या है? Adequate and efficient cold chain infrastructure. ये हमारी बहुत बड़ी problem है. और ये एक persistent problem है जिसको के लेकर के हम बार बार बात भी करते हैं. तो कोल्ड स्टोरेज हमारे पास उतना नहीं है कि चेन फॉर्म में. ठीक है. इसी की वजह से कई बार क्या होता है कि हमारे स्टेट टू स्टेट एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम होती है और दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है और चीजें महंगी हो जाती हैं. ठीक है. वर्ल्ड वाइड stringent guidelines for importing food and agricultural product, the probability of exports from India getting rejected increase. क्या हो जाता है? अब देखिए हमारे यहाँ क्या एक होते हैं, उनको हम बोलते हैं सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स. ठीक है. सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी. ठीक है. ये क्या होते हैं? असल में ये होते हैं कि ये एक तरह की कुछ गाइडलाइंस हैं कि कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि मीट करना होता है किसी भी प्रोडक्ट को, सच दैट दैट प्रोडक्ट्स बिकम केपेबल ऑफ बीइंग ट्रेडेड और बीइंग एक्सपोर्टेड. अब हमारे यहाँ के इंडियन प्रोडक्ट्स में ये प्रॉब्लम होती है दैट मेनी ऑफ द कंट्रीज दे रिजेक्ट आवर प्रोडक्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट दे से दैट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग देम इन अ हाइजीनिक मैनर, वी आर नॉट they are not clean. Many a times that is what is told to us. Then the water that we use for their irrigation is not clean. Those kind of problems they keep popping up. Like for example, अभी कुछ time पहले UK ने किया हुआ था हमारे products के लिए, फिर कुछ products को allow कर दिया. So these kind of problems they keep popping up. वही यहाँ पे ये बता रहे हैं, worldwide has stringent guidelines. Okay, the whole world has stringent guidelines for importing फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इसी वजह से रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लॉजिस्टिक बैरियर रिलेटेड टू कनेक्टिविटी. ओके. लॉजिस्टिक बैरियर तो हमारी कंट्री में एक बहुत प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, जहां पर अगर हम देखते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर अगर 13 to 14% हो रहा है, 15% हो रहा है, तो हम दूसरी कंट्रीज में देखते हैं दैट दे आर स्पेंडिंग हार्डली एनी मनी ऑन लॉजिस्टिक वाला इशू. ठीक है. तो हमारा बहुत अच्छा खासा अमाउंट लॉजिस्टिक पे चला जाता है. ओके. Then we are talking about food security. The food management program in India comprises procurement of the food grain from the क्या कहते हैं, फूड को अगर मैनेज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, प्रोक्योर करेंगे फार्मर से रेम्यूनरेटिव प्राइसेस पे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंज्यूमर को, मेंटेन करेंगे फूड का बफर स्टॉक. फूड सब्सिडी बिल वाज हायर ड्यूरिंग 2021 एंड 2022. क्यों? हम सीधे सीधे बता सकते हैं, कोविड था, फ्री में फूड दे रहे थे, है ना, गवर्नमेंट दे रही थी, तो ये तो हमको पता ही है. So this is something जो हम अगर even if this somebody has not read the economic survey, even if this line comes up, you would know because COVID के दौरान भी knew कि लोगों को food देना पड़ा. Then we have National Food Security Act, NFSA 2013 covers about 80 crore of India's population. The government of India allocated 970 lakh ton. खैर ये तो अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है. What you need to know is that NFSA के बारे में आपको पता होना चाहिए. जैसे इसमें आपको एक वर्ड पता होना चाहिए कि BPL लोगों को क्या मिल रहा है और अगर कोई APL है उसको क्या मिल रहा है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है.
you know, तो इस तरह की चीजों के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और क्या था, और शंकर गुरु कमेटी कौन सी थी, और इस तरह की चीजें, क्योंकि कमिटीज जो सिग्निफिकेंट चीजें हैं उनके उनसे रिलेटेड जो कमिटीज हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है. ओके, देन वी हैव वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. ये तो आपको पता होनी चाहिए. हमने कल भी इन द लास्ट लेक्चर आल्सो वी रेड अबाउट दिस. हमने आधार कार्ड रिलेटेड इसके बारे में बात की. ओके, then simply these are the basic few points that you need to concentrate on while you are talking about agriculture. इन ये जो इन्होंने in every chapter they have given a conclusion तो खैर वो मेंस का आंसर है, समझ लीजिए, but chapter at a glance जो दिया गया है, these are telling you the basic areas that you need to look into. All right, so यहाँ से आपको मेन आपके pointers मिलेंगे. So this was the chapter on agriculture. Now we have our next chapter, which is industry. Industry is seeing a steady recovery. All right, so let me teach you industry in the next lecture. All right, so we are done with agriculture and we are done with climate change in this lecture. I'll schedule a class for you people, and soon we will be doing the next few chapters also. If there is some question, then you people can let me know. All right, or else we'll conclude this class. Is there something that we should talk about? All right, so we'll meet in the next class, and we'll do the rest of the chapters. All right. Okay, okay. Take care, everyone. All right.